Welcome to my channel Knowledge Discovery. I am your facilitator Shivani Mehta and today we'll talk about Scratch. Now Scratch is a visual programming language that will help you to create programs. Now what is it? अभी क्या है कि इनिशियली जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि जो लोग प्रोग्रामर्स होते हैं या ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वही लोग विजुअल गेम्स बना सकते हैं या फिर विजुअल ड्राइंग्स बना सकते हैं कंप्यूटर पे. But now, especially this tool, this software that I'm talking about is primarily meant for kids. So kids starting at the in grade 4 or in grade 5 can start using this building block. I know this is the era of artificial intelligence where everybody has started using AI tools. But again हम लोगों को भी स्क्रैच से पता होना चाहिए कि किस तरह से हम गेम्स को बना सकते हैं, किस तरह विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. So for that we are going to learn today's Scratch, right? So it is a visual programming language. इनिशियली क्या था कि अगर मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा गेम बनाना है जिसमें एक बॉल को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इस बॉल को यहाँ से मूव कराना है यहाँ तक. सो आई यूज टू राइट अ लॉन्ग पीस ऑफ कोड टू मूव दिस बॉल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच, आप सिंपली क्या करोगे, यू विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप, गिव अ input to Scratch to move by 10 units and it will start moving by 10 units. So it has drag and drop kinds of features which makes it super easy. Now if I talk about what all things are there in Scratch, so Scratch सब में सबसे important है हमारा एक element जिसको हम बोलते हैं sprite. जैसे मैंने previous example दिया उसमें मेरा sprite क्या है, ball, because the ball is moving from one place to another. So you can make a game where there are two players A and B who are playing a football or who are playing basketball, or maybe a octopus moving inside water, or if you want you can add a timer to your game. So बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, but you have to apply these conditions to a object. तो जो हमारे objects होते हैं स्क्रैच में उनको हम बोलते हैं sprites. So either you can create a sprite on your own, or what you can do is you can use the default sprites which are available in the library of Scratch, right? उसके बाद होता है हमारा स्टेज एरिया कुछ नहीं, वो एरिया जहां पर आप अपनी सारी कोडिंग करेंगे, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सारे मूवमेंट डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा मेरा स्टेज. और इसी तरह से होता है मेरा ब्लॉक पैलेट. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स विच आर अवेलेबल इन स्क्रैच, लाइक यू हैव मोशन ब्लॉक्स, लुक्स ब्लॉक्स, साउंड ब्लॉक्स, इवन ब्लॉक्स. सो देर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स अवेलेबल. जब मैं आपको स्क्रैच का पूरा डेमो दूंगी देन आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी डिटेल कि ये सब ब्लॉक्स हमारे क्या करते हैं. तो जो हमारी सबसे पहला पॉइंट रहता है, यहाँ पर देखते हैं डिटेल में. सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कंपोनेंट है स्क्रैच का, दैट इज अ स्प्राइट. सो ईच एंड एवरी स्क्रैच प्रोजेक्ट इज मेड ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्राइट्स. जो स्टूडेंट स्क्रैच का इंटरफेस देख चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि एक कैट इज द डिफॉल्ट स्क्रैच विच एवरीबॉडी यूजेस. सो दैट cat which you use is a object and it is called a sprite. Now sprite can be anything, it can be an animal, food or person, or if you want to upload your picture as a character in the game you can do that as well. तो आप अपनी पिक्चर को सेव करो and then you can upload it. So that also becomes a sprite. Now the second concept is a script or a program. तो जो भी हम कोडिंग करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, कुछ मैसेज डिस्प्ले करे, कुछ स्पीक करे, कोई साउंड प्रोड्यूस करे, या फिर वो उसकी शेप चेंज हो जाए, ही स्टार्ट्स रोटेटिंग, ही स्टार्ट्स रिजॉल्विंग. सो ऑल दोस कोडिंग कम्स अंडर योर स्क्रिप्ट और program. Then comes the most important thing which is block. Now what are blocks? Block defines the appearance, movement, the effect of your sprite. सब कुछ आप sprite पे करोगे. Now what are the different kinds of blocks available? जैसे फर्स्ट ब्लॉक आता है हमारा मोशन ब्लॉक. तो नाम से ही समझ आ रहा है अगर आपको स्प्राइट को मूव कराना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, सो फॉर दैट यू विल यूज अ मोशन ब्लॉक. मेरा स्प्राइट किस तरह से दिख रहा है, I want my sprite to be of this size, I want my sprite to be of this size, or I want my sprite to be like rotate counterclockwise or anti-clockwise. So वो सारे looks को मैं define करूंगी under looks block. If you want to add any kind of sound effect तो उसके लिए आप use करोगे sound block. अगर आप कोई trigger add करना चाहते हो, trigger means अब आपने पूरा अपना गेम तो क्रिएट कर लिया जिसमें दो प्लेयर्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और आप फ्लैग पे क्लिक करोगे तो दे विल स्टार्ट क्लिकिंग. फ्लैग पे क्लिक कर दोगे विच इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. बट हाउ शुड द प्लेयर्स मूव, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई क्लिक ऑन वन ऑफ द प्लेयर्स ही शुड स्टार्ट जंपिंग और ही शुड किक द बॉल. सो वो सारे इवेंट्स को आप डिफाइन करते हैं इवेंट्स ब्लॉक में. अगर कोई चीज आपको रिपीटेडली करनी है कि 10 टाइम्स मेरा स्प्राइट जंप करे या रिवॉल्व करे, so for that you can use the control blocks. In case if you want to detect some condition, so for that what we use is sensing block.
अगर कोई ऑपरेशन करना है, जैसे आप कोई गेम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप गेम में विन करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है, जो स्कोर काउंट है, वो इंक्रीज होना चाहिए. सो यू विल हैव टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ऑपरेटर ब्लॉक. Then you have variables blocks which will be used to store and manipulate your data. जैसे a एक वेरिएबल ले लिया या स्कोर एक वेरिएबल ले लिया, तो उसके लिए वो ऐड करने के लिए आई विल यूज माई वेरिएबल ब्लॉक. और अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव ही करना चाहते हैं, सो यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉक्स एज वेल, राइट? So these are the different kinds of blocks which are available in Scratch: motion, looks, sounds, event, control, sensing, operator, variable and my blocks. Now this is how your blocks would look like. जब हम इंटरफेस पे जाएंगे तब देखेंगे कि किस तरह से है. बट अभी के लिए आप देखो, जो ये हैट ब्लॉक है, this hat block starts every script and that actually defines the event of the script. If you want to join multiple blocks together, so what you use is a stat blocks. If you have a condition, use a boolean block. If you want to hold numbers, use a reporter block. If you want to group certain statements together, जैसे एक लूप बनाया कि मेरा नेम प्रिंट करे, मेरा एड्रेस प्रिंट करे, and this is something that I want to do for every player. So for that what I use is this kind of block which is called a C block. And when you are done with your scripting, use a cap block to end the script. So these are the different kinds of block shapes which are available. Alright, so this was the introduction to Scratch. Now quickly what we'll do is we'll make a simple program in Scratch where you will add a sprite, you will move the block, and then your sprite will say hi, hello. So such kind of messages we'll display on this track. So without wasting time, what we'll do is we'll quickly go to the interface of Scratch. In case if you hadn't downloaded Scratch, so you will have to download it. If what I'll do is I'll post the link to download Scratch in the description box as well. Now let's start the coding. So if you look, this is the interface of Scratch. I told you about different blocks: motion, looks, sounds, event, control. So these blocks are available here. Like for example, I'll show you one of the blocks. जैसे motion block में आता है, तो मैंने आपको बताया था कि it is used to define that how should the output look like. So initially there is nothing in your screen, it is a blank stage area. But as and when you will start picking your things here, your program will start executing. So अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एक स्प्राइट ऐड करेंगे. स्प्राइट ऐड करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, ये कैट फेस आपको दिख रहा होगा, वेयर यू क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन एंड यू गेट अ ऑप्शन ऑफ चूजिंग अ स्प्राइट. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आइदर आई कैन चूज अ स्प्राइट बाय क्लिकिंग ऑन दिस ग्लास, and if you see there are different sprites available. So let me take this bear as my sprite. So my sprite is there. For now only the sprite is there. The sprite is not going to do anything because हमने कुछ operation या कुछ कोड ही नहीं दिया उसको कि उसको करना क्या है ऑब्जेक्ट को. So we'll make one of the first simplest programs. ध्यान से देखो. So I have added a sprite. So what I used is the sprites which are available in the library. If you want, you can draw your sprite as well. If you, for example, you don't know, this is your first program, you don't know what sprite you should use, so you can click on surprise. तो एक sprite आ जाएगा मेरा, Sasha. I don't like this sprite. And the last one is that you can upload your own picture as sprite as well. So maybe for now I'll take this bear as my sprite only. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक event add करूंगी. Event means कि मैं क्या करूं ऐसे, what will I do so that my sprite starts executing. So for example, I'll put a simple event that when this flag is clicked, my sprite executes. So my sprite is executing, my program is executing, but it is not doing anything. So what I'll do is कि whenever I click the flag, my sprite should move by 10 seconds. अब आप flag पे click करके देखो, your sprite is moving by 10 steps. Maybe I can make it 25 so that you people can see he's moving by 25 steps. Did you see? Now in case, so this is how you have moved your sprite from one place to another. Now in case this white background doesn't seem good to you, so what you can do is you can add a backdrop. तो यहाँ पर आप देखोगे there is the option to choose the backdrop. Again, either you can use the library backdrops or you can click on surprise. Surprise is the easiest one because it will automatically add a backdrop. In case if you don't like, so you can keep on changing. Oh, this looks nice. So my bear is in the space. Next what I'll do is
or if you want, you can keep on changing a bear in the baseball coat. Okay, this looks nice. So now when I click the flag, my bear moves 25 steps ahead. Now in case after movement, what I want it to do is, I want it to say hello. So let's add this and execute my sprite. So after clicking the flag, my bear moves 25 steps ahead and says hello. If you want to change this message, you can change, and maybe you can write I am bear and for a longer time, and when you execute it, it says I am bear. Alright, so this was the first program where I have given you an introduction to the Scratch interface and how can you make your first program where you add a sprite, move it and display a message. Alright, see you guys. Bye bye. In the next session, I'll be teaching you more programs. Bye. Stay